स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में आम संस्कारी दिस इज रिव्यू। और आज की मूवी है बागबान हैज द मोस्ट अमेजिंग सन्स। चल के सलाह मशवरा कर लेना चाहिए कि इतनी बड़ी रकम का करना क्या है। मैं खुद को नहीं संभाल सकता, उन दोनों को कैसे संभालूंगा? Hey, you know what? Never mind. We do have a lot of amazing parents. भगवान की कृपा से 4 बेटे हैं, 4 अनमोल फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या समझते हैं ये बच्चे? It might have a lot of संस्कारी children. दादी, ये तो क्या हुआ? मैं अपनी प्राइवेसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। It does have very संस्कारी बहू। हमें क्या पता था खातिर कराने का इतना शौक है। God damn it. संस्कारी neighbors at least. Come on. अगर औलाद ऐसी होती है शांति, तो अच्छा है हमें औलाद नहीं है। पढ़ने के लिए छेद में जाना पड़ता, मेरी वजह से आपके नींबू गिर गए। इस मूवी को देख के आज तक कोई खुश नहीं हुआ। Indian movies like others don't have sponsors. They have माई बाप। Bagban can be categorized as greater than Sanskars but less than advertisement for Jeevan Bima policy. It is, however, equivalent to trauma. Like if you measure household trauma on like a vertical scale, then this is your father's belt, this is mom ki chappal, this is dhania, this is like divorce, and then Bagban. It's very high. Also the money that your grandparents gave you and your mom took it away. Bagban's main plot involves 1 hour of story and 2 hours of trauma. रुला दिया ना बेचारी को। It's like that meme of how much trauma do you want? Yes. Movie features Amitabh Bachchan along with his friends of diversity hires. There is like a Punjabi guy. ओ सस्री अकाल झूठ बोलिया। There is a Gujarati guy. मेरी बीवी के मैके का कुत्ता है, दहेज में आया है। There is like a Bihari guy, I guess. अरे कब से गुहारत है, तनिक धीरे नहीं चल सकते का? No South Indians, however, because you know it's Bollywood, bro. No Fair and Lovely, no role. Also no Western Indians because I guess the directors were like maybe they are Chinese. Amitabh Bachchan's character is known as Prem. Prem has so much prem for his wife. मैडम सीख लेंगे तो फिर इसका क्या होगा? अरे मैडम आप चाहें तो आज मैं यहीं रुक जाता हूँ। वाह! So much prem. लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए तोहफा भी नहीं है। है पूजा, तुम्हारे ही पास है। Amitabh Bachchan loves to flirt with his wife, but he stops his son from getting any action. Hey dad, good night. अरे बेटे जरा ये फोन। आओ ना जल्दी। Coming sweetheart. अरे भाई, हमारी जीवन में भी टेंशन था। This literally explains why Amitabh Bachchan has like 4 kids, but his son only has 1. It's like a scene of Amitabh Bachchan like flirting with Hema Malini for like 5 to 10 minutes until he notices there are like 12 people there in the room with him. हम और आप होंगे। और हम अरे तुम सब यहाँ कैसे आ गए? Prem aka 7 crore is a prime example of Umar doesn't last but Tharak lasts forever. मेरी वजह से आपके नींबू गिर गए। Main lead of this movie is Hema Malini or Pooja. Pooja has lots of hobbies like making tea, चलिए इसी बात पर मुंह मीठा कर लेते हैं। chai banana, tying her husband's tie, इतने बड़े हो गए सीखते। and of course making tea. मैं आपको चाय नहीं पिला सकी। Prem and Pooja also has 4 cocaine lines, also known as their sons. Mom, this is not fair. बादाम का हलवा। क्या खा प्रमुख अज्जू भैया? किसी को नहीं मिलेगा। Prem loves his sons so much. बच्चे हमारा प्यार नहीं हमें बांटना चाह रहे हैं। अगर अपने बच्चों से कह दो कि हम जहाँ हैं जिस हाल में हैं खुश हैं। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है जिस पर पांव रख करके वो आगे निकल जाते हैं। क्या समझते हैं ये बच्चे? भगवान की कृपा से 4 बेटे हैं, 4 अनमोल फिक्स्ड डिपॉजिट। After retirement, Amitabh Bachchan and his wife wants to stay with their kids, but the kids are poor. वैसे भी मेरी हालत बदली है। So they suggest the idea of splitting their parents apart so they can take care of them each at a time. This is when the shit goes from bad to delusional. In other movies, bad person creates a conflict. In Bagban, conflicts are created to make a person look bad. उफ़ो, वहाँ पर संजू अखबार चिल्ला रहा है, यहाँ पर आप अखबार लेकर बैठे। आप तो सारा दिन घर पर है ना।
अखबार नहीं मिलता, बच्चों की गलती। पापा जी यहाँ संजू बैठते हैं, आप वहाँ बैठिए ना। चेयर नहीं मिलती, बच्चों की गलती। ये मेरा चश्मा वहां गिर के टूट गया, इसे तुम ठीक करवा दो। बट डैड अगले महीने पक्का। चाय नहीं मिलती, बच्चों की गलती। Keep in mind, Amitabh Bachchan is retired and has nothing to do during his daytime. His son and Bahu goes to work. आज तो मैं बहुत बिजी थी। अरे जल्दी करो भाई। His grandson goes to like a school. चलो चलो राहुल, getting late now. So he is alone the entire day, and yet he chooses to talk to his wife, to sing to his wife, and to typewrite only at night. डैड ये तो नहीं, आप दूसरों को भी सोने ना दें। टाइपराइटिंग नहीं मिलती, बच्चों की गलती। Okay, at this moment, Hema Malini and Amitabh Bachchan leave their kid to meet each other. यही तो वो शहर है जहां हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, सुहागरात मनाई थी। How is this a family movie? Where are the sanskars? And here they meet their adopted son. आलोक। Enter Salman Khan, अरे आलोक बेटा। who single-handedly raises the sanskar levels of this movie. आलोक Salman Khan or Alok, which is an appropriate name because he is literally Aloknath before Aloknath. तमेव माता पिता तमेव चरण स्पर्श। Salman Khan is the ultimate शर्मा जी का बेटा। कि मैंने भगवान को देखा है, मेरे बाबूजी हैं, लेकिन मैं भगवान से एक चीज जरूर मांग सकता कि वो अपनी दुनिया में मेरे बाबूजी जैसे हमेशा बनाते रहे। In typical Indian family, a child achieves their sanskari goals by respecting parents and by respecting God. Salman Khan does both simultaneously. तुम बिन और न दूजा, मात पिता तुम मेरे। Alok loves his father so much that even his wife's name is Arpita. अर्पिता अर्पिता। Hey my sanskaris, I would like to take this opportunity to thank our sponsor for today, that is me. That's right, I'm the sponsor, I pay for these videos. The guy behind this doesn't do anything, he's just there, sort of listens to me, that's it. So please subscribe because I'm going broke. Also, if you have any other movies you would like me to check out, let me know in the comment section. And for more exclusive content, follow me on my Insta and tell your mom I said Pelipona.